A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class, I am going to discuss about one of the most eminent political thought of a great German political thinker of 19th century, who was not only a great economist, sociologist, historian, journalist, but also a great revolutionary socialist during his lifetime, whose contributions we can't define only in one aspect. He was a great versatile personality, and his thought and his writing had provided a very significant impact all over the world. In 19th and 20th century, one among each every three countries of the world were following his ideas of Marxism. Students, कार्ल मार्क्स की जो हम परिचय पाते हैं इस स्लाइड में, he was a very influential personality during his lifetime. He was the founder of scientific socialism, which provided a great answer against utopian socialism preached by Saint Simon, Charles Fourier, Robert Owen, where he based his socialism on the foundation stone of empirical ideas, realism, naturalism, and the use of scientific methods. So, Karl Marx was a very great political thinker of 19th century whose contributions we can't define in words. It's just eminent, everlasting, and seminal one. स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे, उनके पॉलिटिकल थॉट के ऊपर. For before going to this aspect of our study, we should have to analyze today one of the most important quotation that has been provided by Karl Marx in his most outstanding work, that is Thesis on Feuerbach, written in the year 1845. तो कार्ल मार्क्स इन राइटिंग्स में क्या कहते हैं? Yes, philosophers have only interpreted the world in various ways, but the point is to change it. कार्ल मार्क्स का कहना था, different philosophers in different period of time, they have provided different interpretations. दुनिया को समझाने के लिए वो बहुत ही आइडियाज प्रोवाइड किए हैं, बट व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इज हियर? द मोस्ट एसेंशियल थिंग इज हियर, not only we need the interpretations of world only, but there we need a greater amount of change within it. How we will have to bring about positive change in the world so that we can have a better life for all tomorrow. So this was the most important thought of Karl Marx, where there we find a great revolutionary ideas thought that has been presented in his different writings in a very exemplary way, which had provided a very significant impact all over the world, which had provided a greater amount of influence in the thought, mind, ideas, ideologies of different political thinkers of different generations. In 19th and 20th century, and even today also, there we find the followers of Marx ideas and his ideology of Marxism for the sake of justice for the proletariat class of the society. So this is the most important thing that we are going to cover today in his political thought of Karl Marx. But before moving to this slide of political thought, first of all we should have to focus here the time period of Karl Marx. कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में ट्रायर सिटी में, जर्मनी की, और उनका निधन हुआ था इंग्लैंड में इन द ईयर 1883. So this was the time period 1818 to 1883, is which there we find one of the most historical period of world history. This was the period of industrial revolution, the second phase of industrial revolution. And in this period of time, Karl Marx was the child of the day, the child of his time.
जिन पर बहुत ही इन्फ्लुएंसेस हम लोग देख सकते हैं उनके ऊपर, जो फिजिकल दी देन सिचुएशन की साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस बाय डिफरेंट राइटिंग्स ऑफ डिफरेंट थिंकर्स, जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक हीगल, इकोनॉमिस्ट आदम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, लॉडविग फेरवैक, इनके बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया था उनके ऊपर. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दी देन सिचुएशन where there we find industrial revolution, and under this industrial revolution the capitalism, where there we find growing its head in that period of time, where the poor downtrodden conditions of the workers, farmers, where they were highly exploited by this capitalist, where liberal ideas were greatly suppressed and despotic rule was at height. So this was the most worst period, you may say, where there we find the exploitations of the workers and the downtrodden conditions of the poor class, which pained a lot to the young mind of Karl Marx. बहुत ही व्यथित करता था, बहुत ही पेनफुल था. जो सिचुएशंस हम देख सकते हैं 19th सेंचुरी की, जहाँ पर सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो कैपिटलिज्म का ग्रोइंग ए हेड को हम देखते हैं, और पेनफुल conditions, the deteriorating conditions in the life of poor downtrodden class, worker class, जहाँ पर हर वक्त वो exploited होते थे in the hands of the capitalist. तो समाज दो भाग में बट गया था. one under dominant class, the capitalist group, and other in the hands of the dependent class, those were downtrodden poor, the workers, peasant class of the society. तो इस समय का ये जो सिचुएशंस देखते हैं, कार्ल मार्क्स ही वॉज ग्रेटली पेन्ड अबाउट दैट, एंड ही थॉट हाउ टू प्रोवाइड ए solution, a solid solution to this problem, how this can be possible. So in order to provide a greater solution of this problem, he wanted to know about the present status of the problem, and he wanted to know, if I want to know the present status of the problem, I must have to look back to the past, where there we find the root of the cause, the root or the cause of this problem. So historical analysis करते हुए कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल थॉट को हम लोग देखते हैं, जहाँ पर उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पर वो एनालाइज करते हैं प्रेजेंट स्टाटस of the society, the main important causes of the problem, and why we find such kind of problems of capitalism in that period of time. तो स्टूडेंट्स इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग्स यहाँ देख सकते हैं. तो आई एम नॉट presenting here the name of all these writings due to lack of time, but you should have to remember all this because these are very very important for examination point of view. So let us come to the next important aspect. तो कार्ल मार्क्स जो deteriorating conditions देखते हैं दी देन सिचुएशन की, where worker class, the peasant class, they were highly exploited by the hands of the capitalist. तो उसके लिए he thought about to formulate a philosophy, how we can shape the life of this worker class, peasant class of the society, and for that reason he provided a clarion call to the all workers of all countries to make them united with each other and struggle or revolutionized in the all over the world. And for that purpose we find one of the most strongest philosophy that he propounded to eradicate the problems, the evils of capitalism. That what is that philosophy? That was the philosophy of Marxism. That was the philosophy of ideas that provided by Karl Marx, which was based upon the idea of justice for the sake of the proletariat class of the society. So what is Marxism? Let's see. Marxism may be defined as a set of political and economic principles founded by Karl Marx and Friedrich Engels in order to lay scientific foundations of socialism. तो मार्क्सिज्म में हम क्या देखते हैं? फ्रेडरिक एंजल्स, जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स के जो प्रोपाउंड करते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, किस लिए? टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन
इज साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ सोशलिज्म। तो समाज में इनका जो सोशलिस्टिक आइडिया था, इट वाज बेस्ड अपॉन साइंटिफिक फाउंडेशन। अगर हम आर्लियर पीरियड को देखते हैं तो सोशलिज्म का ओरिजिन पहले भी हुआ था। where there we find utopian socialism, you may say, or evolutionary socialism, you may say, where number of thinkers are there, Charles Fourier, Saint Simon, अदर्स थिंकर्स के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे थे। तो उनके जो आइडिया था वो मॉरल चॉइस के ऊपर बेस्ड अपन था, जहाँ पर इनका जो आइडिया था इट वाज बेस्ड अपन साइंटिफिक फाउंडेशन, वर दे सेड दैट सोशलिज्म इट इज़ ए हिस्टोरिकल नेसेसिटी। तो सोशल मार्क्सिज्म क्या कहता है? इट सिक्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी थ्रू historical analysis, where it treats history as a process of conflict between antagonistic forces and classes. तो मार्क्सिज्म जो फिलॉसफी था कार्ल मार्क्स की, which seeks to understand what are the most important problem faced by the human society, जो कि पहले से समाज की जो डिफरेंट स्टेजेस को हम लोग देखते हैं, हिस्टोरिकल स्टेजेस देखते हैं, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दैट ह्यूमन बींग्स दे आर सफर्ड इन डिफरेंट स्टेजेस, जहाँ पर हिस्ट्री को एक ट्रीट करता है। हर समाज की एक हिस्ट्री होता है जहाँ पर हम लोग कन्फ्लिक्ट देखते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट? एंटागोनिस्टिक फोर्सेस, परस्पर की जो विरोधी फोर्सेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, जैसे कि रिच पुअर के बिटवीन, जैसे कि बोर्जुएस एंड प्रोलेटेरिएट के बिटवीन। वी आर फाइंडिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन एंटागोनिस्टिक फोर्सेस एंड क्लासेस। सो हिस्ट्री इज नथिंग एल्स, रेदर इट्स ए क्लास स्ट्रगल, and where Marxism seeks to understand the problem of this human society through historical analysis. तो यहाँ जो conflict arise होता है, क्यों होता है? Because of the fault in the mode of production in which one class come to gain ownership and control over the means of social production and resort exploitation. तो यहाँ conflict की main वजह क्या है? main reason क्या है? reason है फॉल्ट इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग क्लियरली डिस्कशन करेंगे व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन, where there we find forces of production, relation of productions, and how it is provided in a very clear-cut ground for creating conflicts between the proletariat and the bourgeois class of the society, where the exploitations is on bearing upon in the life of labor class of the society. We will see there, but here you should have to understand conflicts arise होता है किस लिए? मोड ऑफ प्रोडक्शंस की फॉल्टी सिस्टम की वजह से, जहाँ पर एक क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं वो गेन करते हैं ओनरशिप और कंट्रोलिंग रहता है हर वक्त मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शंस के ऊपर, और जहाँ हर वक्त वो डोमिनेंट पोजीशन में रहते हैं, और जो लेबर क्लास होते हैं डिपेंडेंट पोजीशन होने के वजह से दे आर ऑलवेज एक्सप्लॉयटेड बाय दिस क्लास ऑफ पीपल, दैट इज़ द कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ पीपल के हाथों हर वक्त वो एक्सप्लॉयटेड होते रहते हैं। तो मार्क्सिज्म जो आइडिया है, इट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हुए समझना चाहता है ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्या है सोसाइटी में, और बस प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहता, अंडरस्टैंड करना नहीं चाहता, rather it tries to provide a good solution how we can eliminate the devils of capitalism in the society, and how we'll provide justice in the life of proletariat by establishing their dictatorship in the state. So Marxism first appeared in the middle of 19th century. For what reason? मार्क्सिज्म का डेवलपमेंट कब हुआ था? 19th सेंचुरी की मिडिल पीरियड में हुआ था, और उसका रीज़न था इट वाज ए रिस्पॉन्स टू द ऑप्रेसिव कंडीशंस क्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो ऑप्रेसिव कंडीशंस, एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस को हम देखते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हुए मार्क्सिज्म का डेवलपमेंट हुआ था इन द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। पर मार्क्सिज्म का जो डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं इन द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स, उसका मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न था कैपिटलिज्म, मेन रीज़न था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशंस बढ़ता गया था,
जहाँ पर हम लोग एक बहुत ही डाउन ट्रोडन कंडीशंस देखते हैं पुअर लाइफ वर्कर्स की लाइफ में। कैपिटलिज्म का ग्रोथ क्यों हुआ था, इसको एनालिसिस करते हैं कार्ल मार्क्स और कहते हैं जब 17th सेंचुरी में इमर्जेंस ऑफ लिबरलिज्म हम देखते हैं एज ए फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, बट बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी this philosophy of human freedom, this ideology of liberalism had become completely failed. For what reason? Because of the doctrine of laissez-faire. स्टेट की कंट्रोलिंग कम हो गया, प्राइवेटाइजेशंस बढ़ते गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेक्टर बढ़ते गया, और जो कैपिटलिस्ट ग्रुप थे उनका हाथ में पावर एंड इकोनॉमिक कंसंट्रेशंस आया, जिसको लेकर वो एक्सप्लॉयटेशंस करते चले गए। फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेसेस-फेयर इट प्रोवाइडेड ए ग्राउंड ऑफ exploitations in the hands of the capitalist, where there we find complete failure to create the conditions of human freedom. So this was the most important thing for which capitalism raged, and to provide a good response against capitalism and its evils, and to provide justice in the life of the poor, Marxism was the most revolutionary idea that developed in the writings of Friedrich Engels and Karl Marx. Of course, liberalism had achieved the goal of establishing capitalism under which capitalists enjoy special power and privilege, but there we find tremendous economic inequalities and consequent injustice. So liberalism provided a good ground for the capitalists, where they achieved special power and privilege, जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक privileged class और दूसरा deprived class, जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, economic inequalities and consequent injustice. तो इस horrible situations को response करने के लिए सोशलिस्ट मूवमेंट का उदय हुआ था, और जहाँ पर हम लोग देखते हैं complete opposition to the policy of free market competition. तो इन टाइम में बहुत सारे इम्पोर्टेंट थिंकर्स सोशलिस्टिक आइडिया को कैरी करते हुए उनका मूवमेंट चलता है, बट these thinkers suggested only visionary solutions far from the hard realities of life. पर इनका जो सोशलिस्ट आइडियाज था ओनली विजनरी सॉल्यूशंस था, जो कि हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ से बहुत दूर था. Therefore, they criticized as utopian socialist. Marx and Engels, they sought to replace this utopian socialism by scientific socialism for the analysis of social problems, and found their solutions. And these solutions came in the form of an elaborate philosophy which we recognized as Marxism. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस एंड कैपिटलिज्म को अपोज करते हुए हम लोग देखते हैं इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की ट्रेंड को, बट दिस इवोल्यूशनरी सोशलिज्म प्रूव टू बी यूटोपियन वन विच कांट बी पॉसिबल इन नियर फ्यूचर, बिकॉज दे वर फोकसिंग ओनली ऑन द विजनरी सॉल्यूशंस विच वाज क्वाइट फार फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, जहाँ पर मार्क्स एंड एंजल्स प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक बेसिस ऑफ सोशलिज्म, जहाँ सोशल प्रॉब्लम्स को बस समझना नहीं है, उसको कैसे दूर करना है, कैपिटलिस्ट जो ग्राउंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस बढ़ता गया है समाज में, उसको कैसे रिमूव करना है, और जस्टिस इन द लाइफ ऑफ पुअर हाउ वी विल हैव टू अचीव, इसके लिए वो प्रोवाइड करते हैं एन एलाबोरेट फिलॉसफी, जिसको हम मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं. तो मार्क्स एंड एंजल्स इन देयर मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि रिटन हुआ था 1848 में, दे प्रोवाइडेड ए क्लैरियन कॉल टू ऑल द वर्कर्स ऑफ ऑल कंट्रीज. सारा विश्व की वो वर्कर्स को एक आह्वान प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, टू यूनाइट अमॉन्ग देमसेल्फ, एकजुट होके फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग देयर इमांसिपेशन, अपने हाथों में अपना उद्धार कैसे करना है, इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट कैसे करना है, और मैनकाइंड जो मानव जाति की फ्रीडम को कैसे अचीव करना है. इसलिए उनका जो राइटिंग्स था, इट क्रिएटेड ए वेरी रिवोल्यूशनरी ग्राउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड.
So let's see what is scientific socialism in a clear-cut term. Scientific socialism refers to a theory of socialism based on scientific laws derived from the historical analysis. कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म कहा जाता है, जहां मार्क्स एंड एंजल, सॉरी मार्क्स यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, मार्क्स एंड एंजल दे हेल्ड दैट वेरियस स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो समाज की जो डिफरेंट स्टेजेस को हम एनालाइज करते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं, ये क्या है? दिस आर नथिंग एल्स रेदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ कंट्राडिक्शंस in material conditions, different material conditions, different stages of society की जो हम contradictions को देखते हैं, these contradictions and their manifestation in historical development we find in different stages of history where human society they lead towards the goal of socialism. समाज के प्रारंभ होने के बाद जो डिफरेंट स्टेजेस होता है, डिफरेंट मटेरियल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करते हुए जो समाज आगे आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम दो क्लास की पीपल पाते हैं, एक डोमिनेंट क्लास, एक डिपेंडेंट क्लास। और डोमिनेंट क्लास जो होते हैं वो हर वक्त एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो जो एक्सप्लॉइटेशन के ग्राउंड बढ़ जाता है, सीमा क्रॉस कर लेता है, लिमिट क्रॉस कर लेता है, तभी जाकर हम लोग क्या देखते हैं, रिवोल्यूशनरी ग्राउंड देखते हैं, poor downtrodden class के हाथ, and there we find a complete goal of socialism, how we should have to attain, that has been focused by Karl Marx and Friedrich Engels in their most important writings, where there we find socialism as a historical necessity, जहाँ पर यूटोपियन सोशलिज्म रिगार्ड्स करता है सोशलिज्म एज ए मोरल चॉइस, साइंटिफिक सोशलिज्म कंसिडर करता है this is the most historical reality. So students, this is the most important foundation of thought that we are finding here in the writings of Karl Marx in his Communist Manifesto, where there we find his ideas of Marxism, scientific socialism or revolutionary socialism you may say. तो मार्क्स की जो कंट्रीब्यूशंस है we can't define in words. He is a very great personality जिनका आइडियाज़ आज भी there we find the followers are many there to follow the ideas of Karl Marx to provide justice in the life of the poor downtrodden class of the society and to create a better world for tomorrow for all, saving human freedom, philosophy of human freedom for all mankind. So hope you understand this is all about. Next video में I will provide about the most important philosophical foundation of his political thought that is based upon his ideas of dialectical materialism. So hope you understand and hope you will get a clear idea about all this. So see you in next class. Till then, have a nice day. Goodbye.